Very good morning, students. I hope you all are doing great and revised your previous chapter. Today we are going to do our chapter 3, which is more features of MS Access. So without wasting any further time, let's start the chapter. The name of our chapter is More Features of MS Access. Topics which we will study here are select fields or records in MS Access, use the find and replace feature, learn to filter data, explore the ways to change table view, rename a field, add and delete field in a table, establish relationship between two tables. नाउ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट जो कंबाइन करता है रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस इंजन को विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स. So you have already learned about database, advantages of it, components of database, creating, opening and closing a database in MS Access 2010. Table is a basic component of a database which you enter data. Now in this chapter, you will learn to work with the table. Selecting fields and records. As we need to select a field or a record to make changes in MS Excel, we also need to select a field or record to make changes in MS Excel. So selecting a field. To select a field या फिर multiple fields, हमें अपने माउस पॉइंटर को लेके जाना है ओवर द नेम ऑफ द फील्ड दैट हैज टू बी सिलेक्टेड. माउस पॉइंटर टर्न हो जाएगा इस एरो साइन में, देन क्लिक टू सेलेक्ट द फील्ड. टू सिलेक्ट मल्टीपल फील्ड्स हम अपने माउस पॉइंटर को प्लेस करेंगे ओवर द नेम ऑफ द फर्स्ट फील्ड, देन मूव करेंगे अपने माउस पॉइंटर को अंटिल यू हाईलाइट द फील्ड्स दैट हैज टू बी सिलेक्टेड. सेलेक्टिंग अ रिकॉर्ड या फिर मल्टीपल रिकॉर्ड, उसके लिए हमें अपने माउस पॉइंटर को लेके जाना है ओवर द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द रिकॉर्ड दैट हैज टू बी सिलेक्टेड. माउस पॉइंटर टर्न हो जाएगा इस एरो में, क्लिक टू सेलेक्ट द रिकॉर्ड. इफ यू वांट टू सेलेक्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, आप पोजीशन करोगे माउस पॉइंटर को ओवर द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड, देन मूव करोगे एरो को until you highlight all the records that has to be selected. सिलेक्टिंग अ सेल या फिर मल्टीपल सेल्स, उसके लिए हमें अपने माउस पॉइंटर को लेके जाना है लेफ्ट एज पे अपने सेल की दैट हैज टू बी सिलेक्टेड. फिर माउस पॉइंटर प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम क्लिक कर सकते हैं अपने सेल पे टू सिलेक्टेड. एंड इफ यू वांट टू सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स, आप माउस पॉइंटर को लेके जाओगे लेफ्ट एज पे फर्स्ट सेल के एंड देन मूव कराओगे उसको अंटिल सारे के सारे सेल्स हाईलाइटेड नहीं हो जाते. Now find and replace feature. You have already learned the function of find and replace command. ये जो command है ये useful होती है in MS Access जब भी हमें find और replace करना होता है something in a large database. Find enable करता है हमें कि हम quickly search कर सकते हैं tables, queries and forms for specified database task. Select करना होता है हमें field को to search through all the records in the current field only. ये generally fast होता है particularly if the field is indexed या फिर when select the database to form to search through all fields in all records. Applying find option. To apply find option, हमें टेबल को ओपन करना है where we want to use find option, then select the field यानी कि column that has to be searched, then click on home tab on the ribbon. फिर हम क्लिक करेंगे फाइंड ऑप्शन पे लोकेटेड इन द फाइंड ग्रुप और प्रेस कर सकते हैं हम कंट्रोल एंड एफ. फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा विद द फाइंड टैब. आप नोटिस करोगे वेरियस सब ऑप्शंस आ जाते हैं इन द बॉक्स. इन द फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स हम एंटर करेंगे जो हमें सर्च करना है, फॉर एग्जांपल सेल्स. नाउ लुक इन ड्रॉप डाउन बॉक्स अलाउ करेगा हमें टू सर्च ओनली द फील्ड या फिर ऑल द फील्ड्स इन द एंटायर टेबल. मैच ड्रॉप डाउन बॉक्स प्रोवाइड करता है हमें ऑप्शंस टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ द मैच टाइप. क्लिक ऑन एनी पार्ट ऑफ द फील्ड, ये अलाउ करेगा टू ब्रॉड सेट पॉसिबल सर्च. सर्च ड्रॉप डाउन बॉक्स एनेबल करता है टू सर्च अप या फिर डाउन फ्रॉम द इंसर्शन पॉइंट या फिर सर्च द होल डॉक्यूमेंट. मैच केस एनेबल करता है टू फाइंड ओनली टेक्स्ट दैट हैज द सेम पैटर्न ऑफ अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स एज योर टेक्स्ट डिफाइंड. सर्च फील्ड एज फॉर्मेटेड, ये चेक बॉक्स एनेबल करता है टू चेक द सर्च बेस्ड ऑन दी फॉर्मेट. क्वेरी एक रिक्वेस्ट होती है फॉर डेटा रिजल्ट्स एंड फॉर एक्शन ऑन डेटा. आप यूज कर सकते हो क्वेरी का टू आंसर अ सिंपल क्वेश्चन, टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, टू कंबाइन डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स. अप्लाइंग रिप्लेस ऑप्शन. ओपन करना होता है हमें टेबल जहां पे भी वी वांट टू मेक रिप्लेसमेंट. सेलेक्ट करना है फील्ड यानी कि कॉलम दैट हैज टू बी सर्च्ड एंड देन रिप्लेस. क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिबन, क्लिक ऑन रिप्लेस ऑप्शन लोकेटेड इन द फाइंड ग्रुप या फिर हम कंट्रोल प्लस एच का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं. Find and replace dialog box डिस्प्ले होगा with different sub options with the replace tab. Now in find what box हम एंटर करेंगे कि हमें क्या चेंजेस करने हैं. फॉर एग्जाम्पल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. Here you want to change हर एक फ्रेज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विद द फ्रेज सेल्स हेड. हम सेलेक्ट करेंगे रिप्लेस विद टेक्स्ट बॉक्स को बाय क्लिकिंग ऑन इट एंड एंटर करेंगे सेल्स हेड. क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल बटन. तो एमएस एक्सेस क्या करेगा, सारी अक्रेंसेस देखेगा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की इन द टेबल
और उनको चेंज कर देगा विद द वर्ड सेल्स हेड। सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स, एमएस एक्सेस के अंदर हम रिकॉर्ड्स को सॉर्ट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। व्हेन यू सॉर्ट रिकॉर्ड्स यू आर पुटिंग देम इनटू अ लॉजिकल ऑर्डर with similar data grouped together. As a result, sorted data is often simpler to read and understand than unsorted data. You can change the order of records in a table. This enables you to find, categorize and analyze data. To sort the records, हमें टेबल को ओपन करना है where you want to sort records. Click on the column header for the field that to be sorted. Click on home tab on the ribbon. आप इधर या तो sort option पे click कर सकते हो. Click on ascending to sort it in ascending order. Click on descending to sort the record in descending order and the record will display in the new order. फिल्टरिंग डेटा बाय सिलेक्शन, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो डिजायर्ड डेटा है उसको आप फिल्टर करना चाहते हो तो आप फिल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हो। फिल्टरिंग हमारी मदद करता है टू रिव्यू एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन इन योर डेटाबेस। फिल्टरिंग एक यूजफुल वे है टू सी ओनली द डेटा दैट यू वांट टू डिस्प्ले इन एक्सेस डेटाबेस। नाउ आप फिल्टर का यूज कर सकते हो टू डिस्प्ले ओनली स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स इन अ फॉर्म, रिपोर्ट एंड क्वेरी, टू प्रिंट ओनली सर्टेन रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ रिपोर्ट, टेबल या फिर क्वेरी। टू फिल्टर डेटा बाय सिलेक्शन आप क्लिक करोगे डेटा पे फॉर विच यू वांट टू यूज फिल्टर ऑप्शन। एक्सेस आपको शो करेगा सिर्फ वही रिकॉर्ड्स जो कंसिस्ट करते हैं एग्जैक्टली द सेम डेटा। क्लिक ऑन होम टैब ऑन रिबन, क्लिक ऑन सिलेक्शन ऑप्शन, एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स। क्लिक ऑन इक्वल्स सेल्स टू अपीयर ओनली दीज रिकॉर्ड्स that consist of the required data. Click on toggle filter after reviewing the filter records to show all the records. एक्सेस सॉर्ट करता है रिकॉर्ड्स को बाय देयर आईडी नंबर। फिल्टरिंग डेटा बाय फॉर्म, तो फिल्टर करना है हमें डेटा को बाय फॉर्म। ये अलाउ करता है टू फिल्टर मल्टीपल फील्ड्स एंड डिफाइन क्राइटेरिया फॉर एज मेनी फील्ड्स एज यू लाइक। व्हेन यू फिल्टर अ फॉर्म आप मर्ज कर सकते हो क्राइटेरिया यूजिंग एंड और या फिर अमेलगमेशन ऑफ टू एंड कॉम्बिनेशन फाइंड करता है रिकॉर्ड को जहाँ पे बोथ द क्राइटेरियाज आर मेट, और कॉम्बिनेशन फाइंड करता है रिकॉर्ड जहाँ पे एटलीस्ट एक क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा होता है। To filter data using filter by form, हमें ओपन करना है टेबल। इफ इट इज नॉट ऑलरेडी ओपन then click on home tab on ribbon, click on advanced option, drop down arrow located in sort and filter group, click on filter by form, then in the filter by form window हमें select करना है field and value that has to be used as criteria। select department field, click on department drop down arrow, select sales from the list and ये contain करेगा सिर्फ वही रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो कंप्राइज कर रहे होंगे सेल्स को। अब आप क्रिएट कर सकते हो एंड क्राइटेरिया स्टेटमेंट डिफाइनिंग मोर देन वन क्राइटेरिया ऑन द सेम फिल्टर बाय फॉर्म टैब। फॉर एग्जांपल अगर आप फिल्टर कर रहे हो फॉर नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु इज ए ग्राफिक डिजाइनर एंड हुज नेम इज मुकेश वर्मा, यूजिंग एंड टू क्रिएट एन एंड क्राइटेरिया स्टेटमेंट आप क्या करोगे, आप क्लिक करोगे एक एम्प्लॉय नेम फील्ड पे, देन क्लिक ऑन द नेम लिस्ट एरो एंड सेलेक्ट करोगे नेम मुकेश वर्मा ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम द लिस्ट। क्लिक करोगे आप टूगल फिल्टर ऑप्शन पे, एमएस एक्सेस यूज करेगा इस फिल्टर को एंड शो करेगा सिर्फ वो ही रिकॉर्ड जो हमारे इस डेजिग्नेशन को कंसिस्ट करते होंगे विच इक्वल्स टू ग्राफिक डिजाइनर एंड जिसका नेम फील्ड इक्वल होगा टू मुकेश वर्मा। ओनली वन रिकॉर्ड मीट्स द फिल्टर क्राइटेरिया। यूजिंग और आपको टेबल ओपन करना है, देन क्लिक ऑन होम टैब ऑन रिबन, क्लिक ऑन एडवांस्ड ऑप्शंस इन सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, क्लिक ऑन फिल्टर बाय फॉर्म and filter by form sheet opens. Now from the list or a field आप select करोगे value that you want, click on all tab, एक blank filter by form page open होगा। repeat करने आपको above steps to select another criteria, click on apply filter and sort to apply the filter. If you have already performed the filter operation, तो last filter जो आपने display किया था form में for your convenience delete हो जाएगा from if you do not want it by clicking the advanced option and click on clear all filters. If the clear all filter command is not present, then previously used filter will not clear. Modifying table view, तो आप व्यू कर सकते हो टेबल को इन डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू। इन डेटा शीट व्यू आप एंटर कर सकते हो डेटा। यू कैन यूज डिजाइन व्यू टू चेंज द डिजाइन ऑफ द टेबल। स्विच टू डिजाइन व्यू के लिए आप क्या करोगे, क्लिक करोगे होम टैब पे ऑन द रिबन, क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन, ड्रॉप डाउन एरो एंड क्लिक ऑन डिजाइन व्यू। नाउ एमएस एक्सेस शो करेगा आपको डिजाइन ऑफ द टेबल एंड डिस्प्ले करेगा फील्ड प्रॉपर्टी। स्विच टू डेटा शीट व्यू, उसके लिए हमें क्लिक करना है होम टैब पे ऑन द रिबन, क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन, ड्रॉप डाउन एरो, क्लिक ऑन डेटा शीट व्यू। एमएस एक्सेस शो करेगा आपको डेटा शीट व्यू ऑफ द टेबल। रीनेमिंग अ फील्ड, इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ अ फील्ड आप उसको रीनेम कर सकते हो।
उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है फील्ड नेम पे, जिसको भी आपको चेंज करना है, एक मेन्यू डिस्प्ले होगा, क्लिक ऑन रीनेम फील्ड ऑप्शन, तो फील्ड नेम इज हाईलाइटेड। नाउ आप एंटर करोगे एक न्यू नेम फॉर द फील्ड एंड प्रेस कर दोगे एंटर की को, तो फील्ड नेम शोज द न्यू नेम। Adding a field in a table, तो if you want to add some other information to your table, आप क्या करोगे, आप राइट क्लिक करोगे अपने फील्ड के नेम पे that you want to display after a new field, एक मेन्यू एमर्ज होगा, वहां से हमें क्लिक करना है इंसर्ट फील्ड ऑप्शन पे, न्यू फील्ड डिस्प्ले हो जाएगा इन द टेबल। MS Access will assign a name to a new field as field 1। नाउ आप रीनेम कर सकते हो अपने फील्ड नेम को एंड ऐड कर सकते हो इंफॉर्मेशन टू इट। फील्ड जो कंटेन करता है यूनिक वैल्यूज इज कॉल्ड प्राइमरी की। रिमूविंग अ फील्ड इन अ टेबल, तो आप रिमूव करना चाहते हो किसी फील्ड को इन अ रिक्वायर्ड टेबल, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे फील्ड पे दैट यू वांट टू रिमूव, अगेन मेन्यू आएगा, वहां से हमें डिलीट फील्ड को चूज करना है, प्रॉम्प्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा, MS एक्सेस रिमूव कर देगा द फील्ड एंड रिकॉर्ड कंटेंट फॉर द फील्ड फ्रॉम द टेबल। Creating relationship between tables, तो as you have learned in previous chapter that MS Access एक relational database है, इसका मतलब आप establish कर सकते हो एक relationship between tables, it can be done directly in a relationship window। So if you want to establish relationship between two tables, तो वहाँ पे एक common field होनी चाहिए in both the tables। For example, personal detail table may have an employee ID field and employee detail table may have employee ID field। यानी कि जो दो टेबल्स का हम रिलेशन कर रहे हैं उन दोनों में फील्ड हमारी एक एटलीस्ट सेम होनी चाहिए। टू टेबल्स कैन बी मर्ज्ड बाय दैट फील्ड, उस फील्ड की हेल्प से वो दोनों टेबल्स मर्ज हो सकते हैं। द फील्ड टाइप मस्ट बी सिमिलर इन बोथ टेबल्स फॉर अ रिलेशनशिप टू एग्जिस्ट। मोस्ट रिलेशनशिप में जो प्राइमरी की है वो इन वन टेबल इज एसोसिएटेड विद द फील्ड इन अनदर टेबल दैट इज नॉट इट्स प्राइमरी की। नाउ इन वन टेबल जो फील्ड है वो कंसिस्ट करती है यूनिक वैल्यूज, वेयर एज इन अनदर टेबल इट डज नॉट। रिलेशनशिप फील्ड इन द अदर टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की। नाउ हम क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं रिलेशनशिप इन अ स्पेशल डेटाबेस व्यू फॉर रिलेशनशिप्स विंडो। नाउ आप स्टैब्लिश कर सकते हो रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स बाय ड्रैगिंग अ फील्ड फ्रॉम वन टेबल ऑनटू द फील्ड फ्रॉम अनदर। टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल हमें क्लिक करना है डेटाबेस टूल्स टैब पे, क्लिक ऑन रिलेशनशिप ऑप्शन फ्रॉम द रिबन टू शो द रिलेशनशिप विंडो। नाउ रिलेशनशिप विंडो डिस्प्लेज if any relationship already present between the table in your database, एक बॉक्स आएगा of each table displaying in the window। Show table dialog box may also display giving all the tables in your database। Now if the show table dialog box does not display, तो हम क्लिक करेंगे show table option पे in the ribbon to appear the dialog box। क्लिक करना है टेबल पे that you want to add to the relationship window, click on add button to add a table to the window, repeat the above steps for each table that has to be added। Now when you complete adding the tables to the relationship window, click on close button to remove show table dialog box। Relationship window display करेगा box for each table, primary key होगी for each table highlighted and primary key uniquely identify करती है each record in a table। Now आप create कर सकते हो relationship between tables defining the matching fields in the table। हमें ब्रिंग करना है माउस पॉइंटर को ओवर द फील्ड दैट यू वांट टू यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप। नाउ मूव करना है हमें फील्ड को विद माउस ओवर द अदर टेबल अंटिल एक स्मॉल बॉक्स डिस्प्ले नहीं हो जाता ओवर द मैचिंग फील्ड। एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, टेबल क्वेरी एंड रिलेटेड टेबल क्वेरी एरिया शो करेगा नेम ऑफ द टेबल्स दैट यू want to create a relationship between and the name of the matching field। हमें क्लिक करना है क्रिएट बटन पे टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। लाइन कनेक्ट करेगी फील्ड को इन द टू टेबल्स टू डिस्प्ले रिलेशनशिप इज क्रिएटेड। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल इज नॉट रिक्वायर्ड, तो आप डिलीट भी कर सकते हो, क्लिक ऑन द लाइन फॉर द रिलेशनशिप दैट टू बी डिलीटेड। हमें प्रेस करनी है डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड, वार्निंग डायलॉग बॉक्स एमर्ज होगा कंफर्मिंग द डिसीजन एंड क्लिक ऑन यस बटन टू डिलीट द रिलेशनशिप परमानेंटली। क्रिएटिंग अ फॉर्म अप्लाइंग विजार्ड, तो फॉर्म को हम क्रिएट कर सकते हैं टू व्यू वन और मोर टेबल फ्रॉम द डेटाबेस फाइल एंड टू एडिट डेटा कन्वीनियंटली। क्रिएटिंग फॉर्म्स हम मेक कर सकते हैं अपने डेटाबेस को ज्यादा यूजर फ्रेंडली एंड दिस टाइप ऑफ डेटाबेस कैन बी एंटर्ड एंड एडिटेड इवन एन अनएक्सपीरियंस्ड यूजर। आप क्रिएट कर सकते हो एक फॉर्म को बाय अप्लाइंग फ्रॉम विजार्ड। विजार्ड आस्क करता है हमें टू series of questions and then set up करता है एक form based on your answers। If you want to use the same data from your table in your form, you can do it with the help of form wizard। To create a form using wizard हमें click करना है on create tab on the ribbon, click on form wizard option, form wizard dialog box will display,
Click the drop down arrow of table and queries to show the list of tables in your database. Click करना है table comprising the fields you want to add in your form. Field in a table, you select it displays in the available field area. Double click करना है on each field that you want to add in your form. To add all the fields at once, click this sign. Each field you have selected displayed in the selected field area. If you have selected any field accidentally, तो आप double click कर सकते हो on the field to remove it, and to remove all the fields once, click on this opposite arrow. Now click on the next button. There are different layouts present for forms. आप select कर सकते हो any one of them. Layout of a form decides the arrangement of information on the form. Click on the buttons for a layout that to be used for your form. Preview the selected layout. You can notice the prevented area. Now click on next button to continue. Enter करना है आपको name of your form. Click on finish button to create your form and you will get your form within selected field name. After viewing your form, हमें click करना है close button पे to close the form and return to the database window. Navigating through the records, access include करता है navigating control that makes it easy to switch between various forms and reports in your database. Navigation form is simply a form जो contain करता है navigation control. Navigate through the records, follow the given steps. Click on any one of the following: first record, next record, previous record या फिर last record. आप मूव कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे, प्लेसिंग द माउस पॉइंटर ओवर द नंबर ऑफ करंट रिकॉर्ड. Enter the number of record that to be moved and press enter key. Click on new record button to start a blank record. Changing the view of form. So there are two customized view, design view and layout view. जो obtainable है to view form in design view. Each object seems as a separate editable element in the form. In layout view हम rearrange कर सकते हैं form controls को, adjust कर सकते हैं उनके sizes directly on the form. Switching to design view, तो हम to use design view follow the given steps. Form को open करना है, click on home tab on the ribbon, click on view option and click on design view. MS Access appears the form's design. Now switching to layout view, उसके लिए हमें home tab पे जाना है on the ribbon, click on view option, click on layout view. MS Access show करेगा हमें the forms as it originally displays, but each element is editable. To return to form view, आप click कर सकते हो view option पे and then click on form view. Let's revise the chapter. Selecting a field and record is an important characteristic in MS Access. In the case of selecting a field, move the mouse pointer over the name of the field to be selected. In selecting a record, move your mouse pointer over the area to the left of the record. Find and replace command is very useful in MS Access to find and replace something in a large database. Filtering data can enable you to review and analyze information in your database. You can create an and criteria statement defining more than one criteria on the same field by form tab. In MS Access, आप apply कर सकते हो data sheet view and design view. In most relationships, primary key field is one table is associated with the field to another table that is not its primary key. Relationship field in another table is called foreign key. Special database view called relationship window allow करता है हमें to create relationship between tables, and you can create a form applying from wizard. To customize views, design view and layout view are useful in MS Access. Let's do the exercise of the chapter. So our first question is tick the correct option. Which of the following method will you apply to select a field? Place the mouse pointer over the name of the first field. Which of the following enables you to search record in a large database quickly? Fine. From wizard, it displays, but form wizard is present under which of the following tab? Create. Design view is located in which of the following tab? View. Which of the following is created to view one or more tables in table from the database? Form. Now fill in the blanks. Dash is a drop down box allow you to search only the fields for a current field in an entire table. Search. MS Access shows the default data sheet view of the table. The relationship field which is not a primary key in the other table is called foreign key. You can create a form applying form wizard, and you can click on the dash to appear all the records which were filtered earlier. Apply filter. That's true, true, false. MS Access
In MS Access, we select a field or a record to make changes. False. The find command enables us to search tables, queries, and forms quickly. True. We can sort records in ascending or descending order in MS Access. True. User cannot navigate through the record. False. Layout of a form never determines the arrangement of information on the form. False. And there are two customized views in the design view. False. So students, this was a complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise it once again and learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.